Hello to all, myself Shubhi Sharma and welcome back to Biology Concepts once again. And in today's video, I am discussing on a very interesting and innovative topic, that is adolescence and drug alcohol abuse. So without any further delay, let's get started. So adolescence means a period and a process during which a child becomes mature in terms of his or her attitudes and beliefs for effective participation in society. The period between 12 to 18 years of age may be thought of as adolescence period. 12 से 18 ईयर्स तक की एज का जो पीरियड होता है वो एक एडोलसेंस पीरियड होता है और इस पीरियड में किसी भी इंडिविजुअल का इफेक्टिव पार्टिसिपेशन होता है सोसाइटी में. In other words, adolescence is a bridge linking childhood and adulthood. Thus, it is a very vulnerable phase of mental and psychological development of an individual. किसी भी individual की life में ये बहुत ही important phase होता है क्योंकि इसमें mental और psychological development होता है किसी भी child का. And एडोलसेंस जो है वो एक ब्रिज है जो कि लिंक करता है चाइल्डहुड और एडल्टहुड. एडल्टहुड और चाइल्डहुड के बीच का जो ब्रिज होता है उसे हम एडोलसेंस पीरियड टर्म करते हैं. इस फेज में क्यूरोसिटी होती है फॉर एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन constitute common causes which motivate youngsters towards drug and alcohol use. A child's natural curiosity motivates him or her to experiment. ये एक ऐसी एज होती हैं जब यंगस्टर्स को बहुत ही ज़्यादा क्यूरोसिटी होती है न्यू चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने की, ट्राई करने की, एडवेंचर की. तो इसी वजह से फर्स्ट टाइम जो हैं वो यंगस्टर्स जो हैं वो ड्रग और अल्कोहल का यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं. But later, the child starts using these to escape facing problems. लेकिन धीरे धीरे जैसे ही चाइल्ड इसे यूज़ करने लगते हैं या कोई भी इंडिविजुअल इसे यूज़ करने लगता है तो फिर उसकी हैबिट हो जाती है, वो एडिक्ट हो जाता है और इसके प्रति, एंड इससे ज़्यादा भी वो इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो प्रॉब्लम्स से एस्केप कर सकें. Of late, stress from pressures to excel in academics or examinations has played a significant role in persuading the youngsters to try alcohol and drug. Examination में अच्छा परफॉर्म करने के लिए प्रेशर होता है उनके पेरेंट्स का. इस चीज़ से भी एस्केप करने के लिए इन प्रॉब्लम्स को फेस ना करें वो, इस वजह से भी वो एडिक्ट हो जाते हैं ड्रग एंड अल्कोहल के प्रति. The perception among youth that is cool or progressive to smoke, use drugs or alcohol is also in a way a major cause for youth to start these habits. Youngsters को ये लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा कूल है, प्रोग्रेसिव है स्मोक करना, ड्रग एंड अल्कोहल कंज्यूम करना, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब चीज़ है. हम कहें बहुत ही रॉन्ग है ये थॉट कि कूल और प्रोग्रेसिव यंगस्टर्स लगते हैं अगर वो स्मोक करें या ड्रग और अल्कोहल को कंज्यूम करें. ऐसा कुछ भी नहीं है. ये बहुत ही बैड हैबिट होती है और इससे आपकी हेल्थ अफेक्ट होती है, एज आई टोल्ड अर्लियर ऑल्सो, और इसमें आप मेंटली और फिजिकली जो हैं वो वीक हो जाते हैं. टेलीविज़न, movies, newspapers, internet also help to promote this perception. Other factors that have seen to be associated with drug and alcohol abuse among adolescents are unstable or unsupportive family structures and peer pressure. Now we are discussing what are the effects of drug and alcohol abuse. The immediate adverse effects of drugs and alcohol abuse are manifested in the form of reckless behavior, vandalism, and violence.
जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं ड्रग और अल्कोहल को कंज्यूम करने से, वो होते हैं कि इंडिविजुअल का रैकलेस बिहेवियर हो जाता है, वो वायलेंट हो जाता है, उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। और अगर कोई इंडिविजुअल एक्सेसिव डोजेस कंज्यूम कर लेता है ड्रग्स की, तो वो कोमा में भी जा सकता है, उसे सेरिब्रल हेमरेज भी हो सकता है एंड इट इज़ वेरी फेटल, तो यस, डेथ भी हो सकती है। And the warning signs of drugs and alcohol abuse among youth include drop in academics. सबसे important reason ये है कि कोई भी यंगस्टर अगर वो एकेडमिक्स में फेल हो जाता है या किसी के मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, तो वो ड्रग एंड अल्कोहल की तरफ बढ़ता है और एडिक्ट हो जाता है। And now, one of the reason for consuming drug and alcohol abuse in youngsters are lack of interest in personal hygiene, withdrawal, isolation, depression, fatigue, aggressive and rebellious behavior, deteriorating relationships with family and friends, loss of interest in hobbies, change in sleeping and eating habits, fluctuations in weight, appetite, etc. Those who take drugs intravenously by using needle and syringes are more likely to acquire serious infections like AIDS and hepatitis B. ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि ड्रग्स को इंट्रावेनसली लेते हैं, इंजेक्शन निडल्स और सिरिंजेस यूज़ कर, तो उनमें चांसेस होते हैं सीरियस डिजीजेस होने के, जैसे कि एड्स एंड हेपेटाइटिस बी। एंड एज यू नो, दीज वायरसेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू द अनदर इंडिविजुअल, एंड बोथ एड्स and hepatitis B infections are chronic infections and ultimately fatal. ये बहुत ही chronic infections होते हैं, means लंबे चलने वाले infections होते हैं and death causing होते हैं. AIDS can be transmitted to one's life partner through sexual contact, while hepatitis B is transmitted through infected blood. Another misuse of drugs is what certain sport person do to enhance their performance. जो sports person होते हैं वो अपनी performance को enhance करने के लिए भी drugs का use करते हैं, which is very bad. So these are some of the adverse effects of drug and alcohol abuse which you must remember. And now I'm discussing what are the prevention and control of drug and alcohol abuse. So number one is avoid undue peer pressure. Every child has his own choice and personality which should be respected and appreciated. A child should not be pushed unduly to perform beyond his or her threshold limits, be it studies, sports or other activities. हर एक बच्चे की अपनी खुद की पर्सनैलिटी होती है, अपनी चॉइस होती है, जिसे हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए पेरेंट्स को भी, और उन्हें फोर्स नहीं करना चाहिए कि वो अपनी लिमिट्स के बियॉन्ड जाकर परफॉर्म करें. सो ये पेरेंट्स को समझना चाहिए एंड टू अदर इंडिविजुअल्स ऑल्सो. नंबर 2 इज एजुकेशन एंड काउंसलिंग. Educating and counseling him or her to face problems and stress and to accept disappointments and failures to be a part of life. अगर आपका बच्चा किसी एग्जाम में या किसी अदर एक्टिविटीज़ में फेल हो जाता है, तो उसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको मोटिवेट करना चाहिए, ना कि प्रेशराइज करना चाहिए. और आप काउंसलिंग भी करवा सकते हो अगर आपके बच्चे को स्ट्रेस है तो, एंड उन्हें ये समझाना चाहिए कि जो फेलियर्स होते हैं, जो बच्चे फेल हो जाते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ. फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ. और फेलियर का मतलब ये नहीं है कि आप हार गए, इसका मतलब ये है कि आपको नेक्स्ट टाइम जो है वो अपना 200% देना है.
And number third is seeking help from parents and peers. Help from parents and peers should be sought immediately so that they can guide you appropriately. Help may be sought from close and trusted friends. अगर आपको लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, तो आप अपनी प्रॉब्लम को अपने पेरेंट्स के साथ या ट्रस्टेड फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हो. एंड अपने मन में ही आपको कोई बात नहीं रखनी चाहिए, कुछ ऐसा वैसा नहीं सोचना चाहिए. यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम योर गाइड. And number fourth is looking for danger sign. If someone find using drugs or alcohol, should not hesitate to bring this to the notice of parents or teacher in the best interest of the persons concerned. अगर आप किसी को ड्रग और अल्कोहल कंज्यूम करते हुए देखते हो तो आपको हेजिटेट नहीं होना चाहिए, बल्कि टीचर को इन्फॉर्म करना चाहिए. Last is seeking professional and medical help. As you know, a lot of help is available in the form of qualified psychiatrists, psychologists, and rehabilitation programs to help individuals. With such help, the affected individual with sufficient efforts and willpower can get rid of the problems completely and lead a perfectly normal and healthy life. So that's all from my side. Thank you so much for listening to me. I hope this video will be quite useful and informative for you. If you like the video, then don't forget to like, share, subscribe and comment down. Thank you so much.